Now let us move on to the next chapter of Geography Class 6 NCERT, our country India. So in this chapter we'll study these topics. Let's move on to the first topic, that is location of India. Location of India में you will study कि India कौन से latitudes and longitudes पे located है and where India stands population wise in the world. Lastly, extension of Indian landmass. Let's start. India's total landmass, which includes main landmass plus islands. So the total landmass of India is 3.28 million square kilometers, which means 32 lakhs 80,000 approximately. Okay, I've just said कि इंडिया का total landmass में main landmass and islands आएंगे. उसका मतलब है India has land boundary and coastlines. So land boundary का मतलब, if you carefully look at the map of India, then this boundary of India is called जितना भी ग्रे पोर्शन है इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ इंटरनेशनल कंट्रीज. ठीक है, तो ये बाउंड्री के बाहर आपको लैंड मिलेगा, पानी नहीं. ओके, सो इट विल बी नोन एज लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया. जैसे यहाँ पर पाकिस्तान, ये वाले बाउंड्री में चाइना, नेपाल, यहाँ पर बांग्लादेश. ओके, सो ये वाले बाउंड्री के बाद आपको लैंड मिलेगा, डिफरेंट कंट्रीज मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंडिया की लैंड बाउंड्री. सो द लेंथ ऑफ इंडियाज लैंड बाउंड्री इज 15,200 किलोमीटर्स. ठीक है, नाउ कम्स कोस्ट लाइन्स. कोस्ट लाइन्स मतलब इंडिया की ये बाउंड्री के बाद आपको मिलेगा पानी, वहां पर लैंड नहीं होगा, होगा आपको पानी. द ब्लू पोर्शन हियर. ओके, दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडियाज मेन लैंडमास. इंडिया के मेन लैंडमास के अलावा देयर आर टू आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज लक्षद्वीप, समवेयर इट इज हियर, एंड सेकेंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो इसकी कोस्ट लाइन भी मिलाकर इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर्स. Okay, now coming to population, India is the second most populated country after China. पूरे वर्ल्ड में इंडिया population wise second number पे आता है after China. China is the most populated country in the world. अब इंडिया पे कौन से latitudes and longitudes आएंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे. From west to east, इंडिया का ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है एंड दिस इज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाओगे तो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स का एक्सटेंड होगा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट. ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स. अब लैटिट्यूड्स देखेंगे. दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ से यहाँ तक द स्ट्रेच ऑफ latitudes is from 37 degrees 6 minutes north to 8 degrees 4 minutes north. This is the extent of latitude, the red color one, and black color one extent of longitudes है. हमने already latitudes and longitudes पढ़ा था previous chapters में. Now you must be wondering कि यहाँ पर भी north लिखा हुआ है and यहाँ पर भी north. Why? And यहाँ पर भी east and यहाँ पर भी east. So if you look at the world map, then as we have already studied, this is the 0 degree longitude, that is prime meridian, and this is 0 degrees latitudes, which is equator. Okay, so longitudes, the prime meridian divides the earth into two halves. In the east, eastern hemisphere, and in the west, western hemisphere. Okay, all this part is western, all this part is eastern. Now the equator divides the earth into two halves again, but here in this case it is northern hemisphere in the north, and in the south it is southern hemisphere. So this all is southern hemisphere and this all above the equator is the northern hemisphere. If you look at India in the world map, this is India. So India is completely in eastern hemisphere in this part, okay, and it is completely in northern hemisphere in this part. So that is why we write that India's longitudinal stretch
is from 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. Okay, the black line here. And the latitudinal stretch of India is from 37 degrees 6 minutes north to 8 degrees 4 minutes north. Okay, now this is the northernmost point of India and this is the southernmost point of India. Here is Ladakh and here it is Kanyakumari. So India's stretch from north to south is from Ladakh to Kanyakumari. Now this is westernmost point of India and this is easternmost point of India. Here it is Kutch and here it is Arunachal Pradesh. So India's extent of west to east is from Kutch to Arunachal Pradesh. Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north latitude, passes almost halfway from the country. 82 degrees 30 minutes east is taken as standard meridian of India. To avoid disturbances, we have adopted standard meridian of India. Okay, so due to standard meridian of India, there is a uniform time in all over India. So now we have come to the end of location of India.